friends, welcome to my channel The JC Guide, and today I have brought you a latest video on a latest phone by Realme, which is Realme X7 Max, which is a 5G phone which I have purchased from Flipkart. और जो मेजर थिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में इज लाइक द डिस्काउंट दैट आई हैव गॉट ऑन दिस फोन, and actually everybody is getting it, not only me, and you can get a maximum discount of around 11-12,000 rupees also on this phone. And this phone, which is supposed to be priced at 27,000, people are buying it for 15 to 16,000 as well. So for me this has been taken at 22,000. And of course it's a good deal. अगर आपका कोई बजट है 25,000 तक, and if you want to buy a future ready 5G phone along with the finest processor and also a good camera quality and a decent performance, then this phone is a must buy. So basically ये जो phone है जो मैंने परचेज किया था, this is the box that I have got, the big box. और बॉक्स में ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है. Only you get is what charger of 65 watts and type C cable. And ये जो फोन है ये पूरा चार्ज हो जाता है अराउंड 50 मिनट्स में. In 15 minutes it gets charged fully. और समटाइम मतलब मेरा जो पुराना फोन था it used to get around 2.5 hours to get charged, but this one gets charged around like 40% of time for what that previous phone which was of MI's what it was taking. So इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, मैंने अराउंड इसको कुछ 15 दिन या फिर 8-15 दिन कुछ मैंने यूज किया है, a week or two. So this phone has impressed me a lot. इसका UI अच्छा है. आप सब जानते हैं जो Realme UI 2.0 है, which is based on the color OS. And जो OnePlus फोन होते हैं या फिर जो Oppo फोन्स होते हैं और ये Realme फोन्स, these smartphones have same UIs, which is originated from the color OS and which is quite stable and performing quite good. So इस फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है it works nicely. The cameras has a good features, different types of filters and some creative AI modes which are very cool to get picturized on. मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे. जो आप देख सकते हो जो मैंने फोटोज लिए हुए इस पर्टिकुलर फोन से. और अगर हम बात करें इसके सेल्फी कैमरे की, आई होप इसका सेल्फी कैमरा जो है विच इज ऑफ 16 मेगापिक्सल, विच आई एक्सपेक्ट टू गेट अराउंड अगर ये 32 मेगापिक्सल का होता तो दैट विल बी वेरी बिगर एडवांटेज फॉर दिस फोन. और सबसे बड़ी बात मतलब इसका एक अल्टरनेटिव वेरिएंट है Realme X7 Pro. सो जो प्रो फोन अगर आपको लेना है तो उसका जो प्रोसेसर है विच इज MediaTek Dimensity 1000 और इसके अंदर जो है दैट इज 1200. सो प्रोसेसर इसका फास्ट है, लेकिन प्रो में कुछ डिस्प्ले साइजेस एंड ऑल वो कुछ प्लस दिया हुआ है. लेकिन प्रो में जो है 3.5 mm जैक नहीं मिलता है आपको. ये जो जैक है यहाँ पे, ये जैक आपको 3.5 mm जैक वाला ये प्रो में नहीं है. तो अगर आप इसके काफी बड़े फैन है 3.5 mm जैक है, इफ यू आर म्यूजिक एंथुसियास्ट, if you prefer to put earphones and play games on your phone, then I think you should go with this Realme X7 Max. 5G के बैंड्स कंफर्म तो नहीं है इंडिया में, लेकिन अराउंड 7 बैंड्स का सपोर्ट है. सो जो मेजोरिटी जो ऑपरेटर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं N78 बैंड्स के लिए, जो मिल जाए इंडिया में किसी को, अगर किसी ऑपरेटर को. सो दैट N78 बैंड इज क्वाइट everyone is looking forward, every mobile operator is looking forward for that band. So if that band comes into the India, then इसमें इसका सपोर्ट है, so ये डेफिनेटली सपोर्ट कर देगा. ये फोन जो 27,000 में अगर आप परचेस करते हो तो यू आर गेटिंग इट कॉस्टली. अगर आपको 27,000 का अगर ये फोन लेना है, उसके अलावा आप जो है OnePlus Nord 2 ले सकते हो, या फिर Samsung का जो लेटेस्ट फोन आने वाला है M52 5G, you can buy that also. But for this one, if you are getting this phone in sub 20k, then I'm just suggesting you to
never look around, just go with this one. You will definitely be liking it. In case you are trying to use this phone for more than a year, और अगर आप 2 साल के लिए आपका प्लान है एक फोन लेने के लिए, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर 256 गीगाबाइट्स ऑफ वेरिएंट ऑफ दिस वन, क्योंकि 128 गीगाबाइट्स ऑफ रैम समटाइम्स इट फील्स के 2 साल में आपको शायद कम पड़ जाए, या फिर आपको ओटीजी यूज करके पेंटर में सारा डेटा ट्रांसफर करना पड़े. सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो यू शुड बेटर गो विद दिस 256 गीगाबाइट्स ऑफ वेरिएंट. ब्लैक वेरिएंट है, सिल्वर है, मेरे पास जो है सिल्वर वेरिएंट है. लुक कूल. अगर मैट फिनिश है इन द बैक. अगर ये फिनिश जो है ग्लास फिनिश होता, अगर पीछे अगर कोई गोरिल्ला ग्लास अगर हमको मिल जाता तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता. सो फिर भी वट एवर आई हैव गॉट द डील फॉर अराउंड 21,000. सो इन दिस डील दिस इज क्वाइट परफेक्ट. सो यू कैन गो विथ दिस. और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, और ऑल्सो वी आर गेटिंग दिस केस, ट्रांसपेरेंट केस, दिस फोन इन द बॉक्स एज वेल. Immediately tool we to get. Or in case you have any more queries on this, please put your comments in the comment section below. I will definitely reply. I reply to each and every comment that I have got on my channel. Sorry for the delayed video. So I will try to make some videos to you. And also there is a big billion days coming in, and also some Amazon sales are coming in the first week of the October. So if you want to choose a phone, some phones are getting launched during that period only. So you can wait for a week.